So we are starting with chemotherapy. Now why and how this chemotherapy word has come. So chemotherapy, who coined this word chemotherapy and from when, which century it started? Antibiotics, they came up from 19th century. ठीक है, antibiotics जब discovered हुए, microbes were found out that they are causing the disease. That was happened in 19th century, and Paul Ehrlich is known as the father of chemotherapy because he discovered that this is caused, and he discovered certain compounds like arsenical compounds which can be used in syphilis. Okay, this was the first which was discovered by Paul Ehrlich, and he named that chemotherapy. Okay. So chemotherapy is the word which was coined by Paul Ehrlich, and Paul Ehrlich is known as the father of chemotherapy. And it came in 19th century. Now for this lecture you have these objectives. You should be able to describe the general principles of chemotherapy, enlist with example the sources of antimicrobial agents, and define the bacteriostatic, bactericidal, narrow spectrum, broad spectrum antimicrobial agents with examples, describe the mechanism of action, prophylactic use of antimicrobial agents, mechanism of antimicrobial resistance and its prevention, and the rational use of antimicrobials including antibiotics stewardship program. So gradually from the 19th century, when came these antibiotics and all, they were discovered. Then the Alexander Fleming, he discovered what? Penicillin in 1941. He is also a renowned historian, which is and a scientist who discovered first a good antibiotic, that is penicillin was discovered, for which the Staph aureus and all are susceptible, and they were widely used and safer antibiotic which was discovered. And at that time itself in 1945, this man Alexander Fleming, he told that if you are using the antibiotic at a sub-antibiotic dose, ठीक है, अगर लोअर डोज पे आपने ये एंटीबायोटिक्स यूज करी, दैट कैन कॉज ड्रग रेजिस्टेंस. ठीक है, तो इट हैज टू बी यूज वेरी लेजिबली. कीमोथेरेपी सबसे ज़्यादा तो इंडिया में वी हैव नो रेगुलेशंस. ठीक है, एंड देयर इज डेवलपमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस विच इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम नाउ डेज. And that's why antibiotic stewardship program is all about. इसका मतलब है judicious use of antibiotics. कि हमें antibiotics अच्छे से use करनी है कि we can prevent the drug resistance, because till 2000, after the 2000, there are not much of the antibiotics have come up with the newer mechanism. Hardly few antibiotics have come up. And it is very difficult to treat these multi-drug resistant or also known as bad bugs. They are difficult to treat these infections. ठीक है, जो पहले इन एंटीबायोटिक से ट्रीट हो जाते थे, अब इन एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं होते हैं. ठीक है, so these antibiotic, that word was coined by Waxman. Waxman coined the word antibiotic. What is the meaning of these words? Chemotherapy means chemical treatment or the use of chemical substance to treat the infection. Now why this chemotherapy word is also used for neoplastic diseases, when we use the drug therapy for neoplastic diseases again, or anti-cancer drugs, we also use the same terminology, chemotherapy. Because both have a selective action, that it causes selective microbial toxicity, and they are selected to target the neoplastic cells. The pathway which are there in the neoplastic cells, which helps in the multiplication of the neoplastic cells, those anti-cancer drugs are specially targeting those pathways to stop the multiplication, to suppress the growth. So that's why because of the selective action, the same terminology is used for both. For anti-cancer drugs also, and for these antimicrobial agents also, we use the word chemotherapy. What is antibiotic? These are the substances which are produced by the microorganism and used to kill the microorganism at low concentration.
ठीक है, एट लो कंसंट्रेशन ये important है because the alcohol or the hydrogen compounds which are used as antiseptics but are not considered as antibiotic because they are used at a higher concentration. But these antibiotics, these are the substances which are produced to kill or to suppress the growth of the bacteria or the microorganism at a low concentration. ठीक है, तो लो कंसंट्रेशन याद रखना एंटीबायोटिक. Now what is these antimicrobial agents? All these antibiotics are antimicrobial agents, but all antimicrobial agents are not antibiotics. Antimicrobial agents क्या होते हैं? They include all the synthetic or the semi-synthetic products also in the antimicrobial agents. एंटीबायोटिक्स हमने दिया था जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें केमिकल सब्सटेंस मिल रहा है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सप्रेस या किल करने में काम आ रहा है, उसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं. एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो हमने सिंथेटिकली केमिकल कंपाउंड डिजाइन किए बाय नोइंग द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द नोन कंपाउंड. ठीक है, उसके बाद हमने लैब में डिजाइन किए कुछ केमिकल कंपाउंड्स, उसको हम सिंथेटिक कंपाउंड्स कहते हैं जो हमने नेचुरली नहीं ऑब्टेन किए. So they all come in antimicrobial agents. So antibiotics and all these synthetic and semi-synthetic compounds which used to suppress the growth or to kill the microorganism at a lower concentration are antimicrobial agents. How they are classified? They are classified by many ways based on the chemical structure. For an example, you have beta-lactam antibiotics because they have the beta-lactam ring in which you have penicillins, cephalosporins, etc. You have macrolides because they have a macrocyclic ring in them, tetracyclines, chloramphenicol. So because of the chemical structure, they are classified. Now, if there is a drug resistance to any of the one drug of this group, there can be cross resistance to the other drug also because they share the same chemical structure. Okay, usually they show resistance because of the same chemical structure. Then they can be classified based on the nature of antimicrobial effect. So what is the nature? Bacteriostatic. Bacteriostatic का क्या मतलब हुआ? Which suppress the growth of the bacteria. इसमें आपकी आती हैं sulfonamides, tetracyclines, chloramphenicol. ये सारे आपके bacteriostatic drugs में आते हैं. Then bactericidal जो kill करता है microorganism को, so they are penicillins, aminoglycosides, these are daptomycin, so these are bactericidal drugs. Then according to the spectrum of antibacterial effect, whether it is narrow spectrum, that is penicillins, because they are targeting the specific organisms like gram-positive organisms, penicillins, aminoglycosides, gram-negative organism. So they are targeting specific type of organism. They are narrow spectrum. Then there are broad spectrum antibiotics which have effect over the multiple type of organisms. That is tetracycline, chloramphenicol. They come in broad spectrum antibiotics. Then there is extended spectrum. Extended spectrum antibiotics that evolved from the narrow spectrum like penicillin group antibiotic, amoxicillin, ampicillin. They are considered in extended spectrum penicillins because their structure has been modified to extend the spectrum of their activity. Then they are also classified based on their mechanism of action, whether they are acting on the cell wall synthesis inhibitors. You have beta-lactam antibiotics. They are cell wall synthesis inhibitors in which you have penicillin, cephalosporins. And then others you have vancomycin, bacitracin, cycloserine. They are all cell wall synthesis inhibitor. And those who are the drugs which inhibit the cell wall synthesis are usually bactericidal in nature. ठीक है, ये usually bactericidal होती हैं. Then you have cell membrane permeability, which will affect the cell membrane permeability. These are polymyxin B, colistin, amphotericin B, nystatin. ये सारी cell membrane permeability को increase करके. Then there are one which inhibits the bacterial protein synthesis, in which you have aminoglycosides, tetracyclines, chloramphenicol, macrolides, and lincosamides. These are all which inhibit the protein synthesis. Again, protein synthesis is, so those who are protein synthesis inhibitor, they are usually bacteriostatic in nature. ठीक है?
जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, दे आर यूजली बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर, and then the one which are affecting the metabolic or the nucleic acid synthesis or its function. Now there are sulfonamides, quinolones, metronidazole, rifampicin. They are affecting the DNA synthesis or the RNA synthesis, or they may be affecting the function of the nucleic acid, like DNA gyrase inhibitors. Quinolones are the DNA gyrase inhibitors. ठीक है, तो बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजली द ड्रग्स विच शेयर द कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शुड नॉट बी कंबाइंड टुगेदर. कभी भी कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स अगर आप एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के दे रहे हैं तो वो ड्रग्स मत कंबाइन करें जो सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे काम करती है. यूजली हम जब ड्रग कंबाइन करते हैं तो वी प्रेफर टू कंबाइन विच आर वर्किंग विद डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. They are also classified based on the organism on which they are primarily active. Antibacterial drugs, commonly अभी हमने जो देखी penicillins, aminoglycosides, these are antibacterial drugs. Antifungal, you have ketoconazole, all these groups, fluconazole, these are antifungal drugs. Then antiviral, you have acyclovir, zidovudine, etc. These are antiviral drugs. Antiprotozoal, you have metronidazole. These are anti-protozoal drugs. Anti-helminthic, mebendazole, albendazole, these are anti-helminthic drugs. Then sources from where it is being obtained. From fungi, you have the drugs like penicillin, which is obtained from fungi. Then bacteria, polymyxin B, bacitracin, colistin, they are all obtained from bacteria. Then actinomycetes, you have this chloramphenicol, tetracycline, these are obtained from actin. Macrolides, these are obtained from actinomycetes. This is very important now. WHO aware classification of antibiotics. ठीक है, this is very important for antibiotics stewardship program जो अभी लेटेस्ट आया है. इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है बिकॉज ड्रग रेजिस्टेंस बहुत बढ़ रही है. सो व्हाट इज दिस WHO aware classification? Now this classifies the drug into 3 groups: access group, watch group and reserve group. ठीक है, ये 3 ग्रुप में क्लासिफाई किए हैं एंटीबायोटिक्स को. एक्सेस ग्रुप में वो वाली एंटीबायोटिक्स आती हैं जो कि फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक हैं या सेकेंड चॉइस ड्रग है किसी भी इन्फेक्शन के लिए. सो बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस यू क्लासिफाई दीज एंटीबायोटिक्स इनटू 3 ग्रुप. फर्स्ट चॉइस और द सेकेंड चॉइस. ये कैसे सिलेक्ट होता है? बेस्ड ऑन द एफिकेसी एंड सेफ्टी प्रोफाइल ऑफ एन एंटीबायोटिक. ठीक है, तो असेस ग्रुप में वो वाली सारी एंटीबायोटिक आती हैं जो कि फर्स्ट चॉइस, जो 25 कॉमन इन्फेक्शन है उनके लिए जो फर्स्ट चॉइस और सेकेंड चॉइस एंटीबायोटिक है उसमें ये एक्सेस ग्रुप और 19 इसमें से एंटीबायोटिक चूज की गई हैं जो इसेंशियल लिस्ट में आ गई हैं. इसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन जो 2019 की जो फॉर्म हुई है उसके अंदर 19 ड्रग्स हैं असेस ग्रुप में. सबसे पहले जो आपको प्रिस्क्राइब करनी है वो होगी एंटीबायोटिक फ्रॉम द एक्सेस ग्रुप. इसमें आपकी कोट्राइमॉक्सिजोल आ गई, पेनिसिलिन की बेंजाइल पेनिसिलिन, बेंजाथीन पेनिसिलिन, एम्पीसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन. ये चार्ट आपके पास होना चाहिए व्हेनेवर यू आर प्रिस्क्राइबिंग द एंटीबायोटिक. उसके बाद आती हैं वॉच ग्रुप की. इसमें 11 एंटीबायोटिक्स आई हैं. Now they are for specific infection or for limited use. They are high priority and watch का मतलब they need to be watched. They have to be used if you cannot use the access group. ठीक है, access group नहीं use कर सकते हैं, then you can use the watch group and they are for specific infection that they need to be used. There you have these 11 antibiotics. Ciprofloxacin, fluoroquinolones में, penicillins में piperacillin, tazobactam for pseudomonas bacteria, cephalosporins. So these are the list in the watch group, and then there is a reserve group in which you have the 7 antibiotics in the essential medicine list. Now these are the reserve for the bacteria which is resistant to all the other antibiotics. ठीक है, they are reserved for these multi-drug resistant bacteria like ceftazidime, avibactam combination, meropenem, veborbactam combination, phosphomycin. You cannot use straight off phosphomycin in a patient.
They are reserved for if it is found to be a confirmed case or suspected case of drug resistant bacteria, then you can use this reserve group. Okay, so they have classified these antibiotics into this access group, watch group and reserve group, and based on that the antibiotics should be used. Because antibiotics use can have various problems or disadvantages. क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? फर्स्ट तो टॉक्सिसिटी आती है, कैन बी लोकल टॉक्सिसिटी, कैन इफ यू आर गिविंग ओरली कैन बी गैस्ट्रिक इरिटेशंस, ठीक है, like azithromycin have lot of gastric irritation, macrolides when you are giving lot of gastric irritation is there, or if you are giving any drug parenterally then pain, cephalothin, tetracycline, chloramphenicol, they can cause pain. So pain is the abscess formation and all that can occur if you are giving parenterally. So that is local toxicity. Then they can cause individual systemic toxicity also. Like aminoglycosides can commonly cause nephrotoxicity or ototoxicity, the detoxicity for aminoglycoside group of drugs. So toxicity is the one. Other is hypersensitivity reactions which are common with sulfur drugs or penicillin group of drugs. So whenever you are prescribing these drugs, you need to take the history of allergy to these drugs, because they are commonly causing drugs which can cause, who are prone for allergic or who have the allergy tendency. You should not prescribe these sulfur drugs or the penicillin group of drugs, or you do some test before prescribing these drugs. Sit down. Drug resistance. Another important problems we'll discuss one by one is drug resistance, superinfection, nutritional deficiency and masking of infection. So what is drug resistance? क्या होता है drug resistance? क्या होगा drug resistance? So insensitivity of microorganism to antimicrobial agent is drug resistance. वो सेंसिटिव नहीं रहेगा माइक्रोऑर्गेनिज्म, उसे हम ड्रग रेजिस्टेंस कहेंगे. दो टाइप की होती हैं, एक तो नेचुरली ड्रग रेजिस्टेंट हो जिसमें कि आपने ड्रग दी नहीं, ड्रग देने के बाद अगर रेजिस्टेंस होती है तो दैट इज नोन एज एक्वायर्ड रेजिस्टेंस. अगर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक आपने ड्रग दी उसके बाद रेजिस्टेंट डेवलप हो गई, उसको हम एक्वायर्ड रेजिस्टेंस कहेंगे. नेचुरली जैसे ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म पे वैंकोमाइसिन, पेनिसिलिन ये काम नहीं करते, ग्राम पॉजिटिव पे अमीनोग्लाइकोसाइड्स काम नहीं करते, तो ये नेचुरल रेजिस्टेंस हो गया. एक्वायर्ड में like staphylococcus which were very sensitive to penicillin, they have acquired resistance now to penicillin group of drugs. Okay, that is acquired, that can be based on two mechanisms, that is by mutation or by transfer of gene. Mutation को हम कहते हैं vertical, ठीक है, vertical resistance, और horizontal resistance को हम कहेंगे transfer of gene. म्यूटेशन जो कॉमनली आप वायरस में देखते हो, ठीक है, वायरस में, सो दे कैन बी सिंगल स्टेप म्यूटेशन और मल्टी स्टेप म्यूटेशन कैन अकर. मल्टी स्टेप म्यूटेशन इज स्लोली डेवलप्स एंड सिंगल स्टेप म्यूटेशन इज इट डेवलप्स very rapidly, like with streptomycin, enterococci, they get resistance, or tetracycline and chloramphenicol, they show multiple step mutation. Now important is transfer of gene. कैसे ट्रांसफ़र होता है जीन, वन बैक्टीरिया से रेजिस्टेंस जीन कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरे बैक्टीरिया में? दैट इज आइदर बाय कॉन्जुगेशन प्रोसेस, दैट इज वन पिलाई इज फॉर्म बिटवीन द टू बैक्टीरिया एंड अ प्लाज्मिड और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच इज containing the R factor, that is the resistance factor, with the presence of resistance transporting factor. ये ट्रांसफ़र कर रहा है दिस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फ्रॉम वन टू अनदर. वैसे ट्रांसफर हो गया. दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ रेजिस्टेंस. सबसे कॉमन अगर पूछा है तो क्या है? कॉन्जुगेशन प्रोसेस, एंड दिस इज कॉजिंग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस. कॉज इज कॉन्जुगेशन. बेसिकली मोस्ट कॉमनली इज बाय कॉन्जुगेशन प्रोसेस. The other is through transduction or through natural transformation. Transduction is through with the help of bacteriophage. Bacteriophage ने carry किया resistance gene and it transferred to another bacteria. Or it is by natural transformation that it released the resistant gene in the environment, and from the environment this other bacteria have acquired the resistance gene or the plasmid carrying the resistance gene.
Now what it result in, either it result in production of certain enzymes, okay, which will destroy the effect of antimicrobial agent. For an example, beta lactam maize will be produced by these bacteria like Staph aureus and all, and they will inhibit the beta lactam antibiotics. ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम होती है जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, तो वो काम नहीं करती बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, जैसे कि पेनिसिलिन. तो स्टेफ ऑरियस ने बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया और उसकी वजह से अब वो रेजिस्टेंट हो गया. सो आइदर बाय प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम और डिक्रीज एक्यूमुलेशन ऑफ द ड्रग, ये इफ्लक्स प्रोटीन डेवलप कर देते हैं विच विल इफ्लक्स द ड्रग आउटसाइड, लाइक कॉमनली सीन विथ फ्लोरोक्विनोलॉन्स और मैक्रोलाइड्स. दे decrease the accumulation of drug inside the microorganism or the permeability is lost. और altering the target of the drug, ठीक है, जहाँ पे वो target पे bind कर रहे हैं, like penicillin binding proteins are there where the penicillins go and bind, the target may be altered, so in that case again they will not work. Then altered metabolic pathway, either they develop some altered metabolic like commonly seen in sulfonamides. Sulfonamides they need to form folic acid, so folic acid के pathway को inhibit कर दिया, it inhibits the formation of folic acid in the bacteria. तो bacteria क्या करते हैं, they started using the preform folic acid, they need not have to synthesize, so they alter their metabolic pathway on which the drug is targeting. So either by altering the metabolic pathway, so through this mechanism they can develop the resistance. So these are the various mechanisms, and cross resistance can develop of drug. अगर एक drug का chemical structure same है तो other drug of that group can also be usually resistant to, even if they are not exposed. ठीक है, अगर expose नहीं भी हुई हैं तो भी that drug may be resistant to that. So that is cross resistance, or either by having a same mechanism of action they can be resistant. Sometimes the cross resistance can be seen in different group also, like tetracycline से resistant है, may be shown resistant to chloroamphenicol also. ठीक है, because they have a usually similar mechanism of action, that is inhibiting the protein synthesis. How you want to or you can prevent the drug resistance? ये बहुत important है for your antibiotic stewardship program. You need to prevent the drug resistance. So no indiscriminate and inadequate or unduly prolonged use of antimicrobial agents. Should not use ideally for more than 7 days. और एक बार start किया है तो 3 दिन तक एंटीबायोटिक लेनी है और प्रॉपर डोज देनी है. ठीक है, ये नहीं कि 2 बार की लिखी है, 1 बार ले ली दिन में डोज. ठीक है, सो दैट यू नीड टू एडुकेट टू द पेशेंट. So this is very important to prevent the drug resistance, that the proper dose, proper route, proper drug has to be given and should not prolong the therapy. You should be following the policy. There should be some antibiotic policy should be followed, that is WHO aware antibiotic policy that has to be followed whenever you are prescribing a drug. There is this antibiotic biogram is maintained. वो क्या होता है एंटीबायोटिक बायोग्राम? जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं दे रिलीज द सेंसिटिविटी पैटर्न ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज बीन प्रिवेलेंट इन द एरिया. आपके हॉस्पिटल में जो केसेस आ रहे हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस से सेंसिटिव हैं, किस एंटीबायोटिक से वो सेंसिटिव हैं. ठीक है, दैट शुड बी, दिस इज अ टीम वर्क विच इज टू बी थ्रू अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. There should be some biogram which has to be maintained. ठीक है, accordingly then antibiotic has to be prescribed. अगर इससे sensitivity ज़्यादा पाई जा रही है जो prevalent है वहाँ पे microorganism, तो वो वाली antibiotic आपको prescribe करनी है और ये सबके पास available हो data. ठीक है, so this computer software, this data is to be maintained whenever this is done. Then rapidly acting and selective antimicrobial agent is to be used. ये नहीं कि कोई भी आया broad spectrum आपने दे दी antibiotic.
Very important to diagnose properly and use a selective drug. Don't use the broad spectrum antibiotic unnecessarily. If you can use the selective and rapidly acting drug, use that drug. Use combination whenever prolonged therapy is required to shorten the course of the therapy. Notorious infections जो कि ये E. coli हो गए, Pseudomonas, Proteus, that is prone for resistance, should be treated intensively. Usually you should use the bactericidal drug for them. Surveillance and monitoring, keep on monitoring these prescriptions. ठीक है कि irrational prescribing नहीं हो रही है. There should be some surveillance program and education of patient and doctors workshop should be carried out. This is all come in your antibiotic stewardship. Now, what is the most important mechanism of concurrent acquisition of multi-drug resistance among bacteria is conjugation. Now, coming to superinfection. So, when you are using for prolonged this or you are using the broad spectrum antibiotics, now what harm can cause extended spectrum antibiotic is they can cause superinfections. Okay? They are more prone for causing superinfections like amoxicillin, clavulanic acid combination or ampicillin or this tetracycline or chloramphenicol अगर आप use कर रहे हैं, so they can cause superinfection. कैसे होता है? जो आपके normal bacterial flora है gut में, उसको destroy कर देता है. वो क्या provide करते हैं? वो आपको immunity provide करते हैं by releasing bacteriocins. ठीक है? By bacteriocins they can compete with the opportunistic infection causing microorganism. उसको grow नहीं करने देते. लेकिन अगर वो destroy होंगे तो वो grow कर जाएंगे and then they can lead to diarrheas and other symptoms. So that can occur in various sites like oropharynx, intestines, respiratory areas, gut, genitourinary tract, skin, etc. and they are very difficult to treat. कौन से organisms हैं which are more common in superinfection is Candida, that is fungal infection, may cause monilial diarrhea, thrush, vulvovaginitis, जिसकी immunity weak होती है, they are more prone for these opportunistic infection. So treat with this with nystatin or cotrimazole. Resistant staph enteritis, that is cloxacillin, either cloxacillin or vancomycin or linezolid. ठीक है? Access category से you are coming to the reserve category. Cloxacillin, vancomycin, linezolid. Clostridium difficile, pseudomembranous colitis, it can cause, you have to give metronidazole. Ideally, you should give metronidazole. If it's not working, vancomycin is the drug. Proteus, UTI, enteritis, it may cause cephalosporins or gentamicin. Pseudomonas, UTI and enteritis, you can give carbonicillin, piperacillin, cephalosporin or gentamicin. ठीक है? ये सारे notorious infective organisms हैं which can cause this superinfection. So for the common infection UTI, usually prolonged therapy is given. ठीक है? What it may result? It may result in Clostridium difficile. ठीक है? एक को treat करने जा रहे हो, you have created another problem for the patient. Usually ICU में क्या होता है? जितने दिन के लिए आया है उससे ज़्यादा दिन एडमिशन हो जाता है. Why? Because of the hospital acquired infection. Then nutritional deficiency, when these antibiotics they destroy the bacterial flora, that is they are helpful in synthesis of vitamin B or vitamin K. So that nutritional deficiency can occur, or some drugs can damage the mucosa and can cause steatorrhea or malabsorption syndrome like neomycin. Then masking of infection क्या होता है? When you are giving the antimicrobial agent for one cause, it may mask the other infection. If you are giving this penicillin for gonorrhea, it may treat the gonorrhea but it may mask the syphilis. Short course of streptomycin you are giving for upper respiratory infection, it may mask the TB. Okay, so you have to be diagnosed, you need to diagnose it properly when you are giving this antimicrobial agents. So these were all the problems they can cause. Who is going to summarize what all problems they can cause? Toxicity, hypersensitivity reaction,
drug resistance, super infection, nutritional deficiency and masking of infection. ठीक है. Now general principle or the choice of antimicrobial agents कैसे choose करेंगे. So there are certain patient factors you have to be keeping in mind whenever you are choosing any antimicrobial agent. कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो हम नियोनेट्स में नहीं दे सकते हैं, चिल्ड्रन में नहीं दे सकते हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोएम्फेनिकॉल. टेट्रासाइक्लिन अगर आपने दी इट मे कॉज ब्राउनिश डिस्कलरेशन और डिपोजिशन इन द बोन्स. क्लोरोएम्फेनिकॉल इन नियोनेट्स मे कैन कॉज सर्कुलेटरी फेलियर. Certain drugs you cannot advise to elderly. The same dose like aminoglycosides may cause more of the renal failure. ठीक है, तो इसलिए you have to be careful. Then renal and hepatic function. Again, another important thing is check the renal and hepatic function before prescribing. You cannot prescribe rifampicin, isoniazid in case of if the hepatic function is low. You cannot prescribe some nephrotoxic drugs like aminoglycosides in case if the renal function is not proper. Local factors, pus is there, you have to first drain the pus. So local factors are there. Drug allergy, need to take the history. Impaired host defense. Impaired host defense, you should prescribe which drugs? Bactericidal drugs. क्यों? Bacteriostatic काम क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जब आप बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स देते हो तो आप व्हेन यू सप्रेसिंग द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, किलिंग के लिए आपको इम्यूनिटी चाहिए उन बैक्टीरिया को, और उसके लिए अगर इम्यूनिटी नहीं है तो यू शुड गिव बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स. प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, यू कैन नॉट यूज ऑल द ड्रग्स. विच ड्रग्स आर सेफर इन प्रेगनेंसी? पेनिसिलिन, cephalosporins or macrolides. These can be given. Other drugs they cannot be given in pregnancy. Genetic factors. G6PD deficiency, you cannot give the drugs like chloroquine, primaquine, etc. So you need to be taking care of all these factors, genetic factors. So these are the patient related factors. Then another thing is organism related factors. कौन सी ऑर्गेनिज्म किस पे काम कर रही है? सैल्मोनेला टाइफा है, टाइफाई बैक्टीरिया है, कौन सी ड्रग दोगे? ठीक है. नाउ पहले क्लोरोएम्फेनिकॉल से सेंसिटिव थे सैल्मोनेला टाइफा, अब क्लोरोएम्फेनिकॉल काम नहीं करती. सो विच ड्रग इज प्रेफर्ड नाउ? सेफालोस्पोरिन्स. ठीक है, तो क्लिनिकल डायग्नोसिस के बेस पे आप डिसाइड करोगे. क्लिनिकल फीचर्स एंड लोकल एक्सपीरियंस, क्या प्रिवेलेंस चल रहा है, क्या सेंसिटिविटी पैटर्न है. सो बेस्ड ऑन दैट देन द बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन. इफ यू आर नॉट एबल टू डायग्नोज देन यू विल डू द बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन. इसके अंदर इंपॉर्टेंट है मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन. मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन आप देखोगे पोटेंसी ऑफ एंटीबायोटिक और टू सी द ड्रग इज रेजिस्टेंट और नॉट. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो रेजिस्टेंट है क्या ड्रग के लिए, उसके लिए ये देखा जाता है. मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन क्या होता है? दैट इज द लोअर कंसंट्रेशन, लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक विच इज यूज्ड टू सप्रेस द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया आफ्टर 24 आवर्स. ठीक है, फिर 24 आवर्स है जो सप्रेस कर दे मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, उसको हम कहेंगे MIC. मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन विच कैन किल 99.9% ऑफ द बैक्टीरिया. द मिनिमम कंसंट्रेशन विच कैन किल दिस. देन पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट. पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट का मतलब है कि कंसंट्रेशन आपकी मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन से कम है, स्टिल द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया रिमेन सप्रेस्ड फॉर सम टाइम after giving the antibiotic. This is known as post antibiotic effect. It is high in these drugs like fluoroquinolones, aminoglycosides, rifampicin. इसमें post antibiotic effect अच्छा रहता है. So ये जो drugs होती हैं जिसमें post antibiotic effect ज़्यादा अच्छा होता है, they show concentration dependent killing. अब concentration dependent killing क्या होती है? कंसंट्रेशन जितनी हाई है, जितनी पीक जा रहा है प्लाज्मा में, उतनी बेटर इफेक्ट आ रहा है उस ड्रग का. ठीक है, उतना बेटर किलिंग हो रही है. एंड दे यूजली शो दिस पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट. को हमें सिंगल हाई डोज देनी पड़ती है. इन ड्रग्स को हमें सिंगल हाई डोज देनी पड़ती है, जैसे कि ये फ्लोरोक्विनोलॉन्स, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, ये हाई डोज सिंगल डोज दी जाती हैं.
इसमें कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट होती है. कुछ ड्रग्स होती हैं जो टाइम डिपेंडेंट किलिंग करती हैं, जिसमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम इट रिमेन अबव द मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन इज इम्पॉर्टेंट. जैसे आपकी अमॉक्सिसिलिन ग्रुप हो गई, पेनिसिलिन ग्रुप्स हो गई, तो ये हम ट्वाइस अ डे देंगे. ठीक है, जो ड्रग्स टाइम डिपेंडेंट किलिंग करती हैं उनको ट्वाइस अ डे दिया जाता है. देन योर ड्रग फैक्टर्स आर देयर. सो ड्रग फैक्टर्स कैसे इफेक्ट करेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम है या ब्रॉड स्पेक्ट्रम कब देंगे. नैरो स्पेक्ट्रम अगर आपको डायग्नोज है तो यू विल यूज द नैरो स्पेक्ट्रम सिलेक्टिव एक्शन ड्रग. अगर यू कैन नॉट, एम्पिरिकल थेरेपी में यू कैन यूज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम. Type of activity, bacteriostatic, bactericidal, sensitivity of the organism, that is based on your MIC value and post antibiotic effect. ठीक है, आप चूज करोगे, आप देखोगे ड्रग रेजिस्टेंट पैटर्न. देन रिलेटिव टॉक्सिसिटी, ठीक है, यू कैन गिव और नॉट. फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल, whether it's showing the concentration dependent killing, time dependent killing, penetration to the site of infection, penetration है कि नहीं है. meningitis है, अगर drug is not able to penetrate the blood brain barrier, you cannot give that drug. Route of administration, अगर emergency है, you need to choose the drug which can be given parenterally. Evidence of clinical efficacy, again very important, and the cost of the drug. ठीक है, तो ये सारे drug factors हैं. So what all the factors, what all the principles you keep in mind before prescribing any antimicrobial agents is patient related factors, organism related factors, and drug related factors. So who is going to explain this concentration dependent killing, time dependent killing, and post antibiotic? So in the plasma, when you're giving antimicrobial agent, more the concentration compared to the minimal inhibitory concentration of the antimicrobial agent, more high it is, more better is the killing effect of that drug. Okay, this is known as concentration dependent killing. For an example, you have fluoroquinolones or aminoglycosides. They are given at a higher dose. Time dependent killing, जैसे amoxicillin हो गई, 2 बार देनी पड़ती है उसको. ठीक है, you have to give twice a day. हाई कंसंट्रेशन में एक बार दे दी तो दैट विल नॉट वर्क विथ अमॉक्सिसिलिन. क्यों? बिकॉज इट शोज टाइम डिपेंडेंट किलिंग. इसका मतलब क्या हुआ कि ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है, दैट इट रिमेन्स मोर अबव द मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन जो नीड होती है एंटीमाइक्रोबियल एजेंट को टू वर्क अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. And remember, whenever the difference between minimum bactericidal concentration and minimum inhibitory concentration is minimal, तो क्या होगा? बैक्टीरिसाइडल होगा, बैक्टीरियोस्टैटिक होगी ड्रग. अगर कम है डिफरेंस बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन में और इनहिबिटरी कंसंट्रेशन में, तो वो बैक्टीरियोसाइडल हुई या बैक्टीरियोस्टैटिक हुई? बैक्टीरियोसाइडल. जितना कम डिफरेंस है दैट इज बैक्टीरियोसाइडल. जितना ज़्यादा डिफरेंस है बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन और इनहिबिटरी कंसंट्रेशन में, उतना वो बैक्टीरियोस्टैटिक होगी. पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, इट इज यूजली सीन विद द ड्रग्स विच आर शोइंग कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग. देन व्हेन यू यूज कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, यूजली यू शुड अवॉइड द कंबाइंड यूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट. तो कब यूज करना है? टू अचीव साइनेजेस्टिक इफेक्ट और द पोटेंशिएशन. उसमें क्या होता है? योर डोज और द MIC इज रिड्यूस टू 25% और लेस. दैट मीन्स दे हैव साइनेजेस्टिक इफेक्ट. एंड इफ इट इज 25 to 50%, दैट मीन्स इट इज एडिटिव. मतलब डोज आधी आधी हो गई तो दैट इज एडिटिव. एंड 50% से भी मोर अगर चाहिए तो दैट इज एंटागोनाइजिंग द ईच अदर एक्शन. So result will be more rapid, lethal, and prolongation of the post-antibiotic effect can be done. So in that case, you can combine the antimicrobial agents when you are wanting a synergistic effect. जैसे कि trimethoprim and sulfamethoxazole are combined together. So when they are combined together, they have a synergistic effect. That is 1 + 1 becomes 3. Usually when you combine two antimicrobial agents, they usually have an additive effect, but some antimicrobial agents like penicillins or aminoglycosides, when they combine, they have a synergistic effect. So you need to use less dose of these drugs.
Usually two bacteriostatic agents जब आप combine करते हैं, they are usually often additive, rarely synergistic. क्विनोप्रिस्टिन और डेल्फोप्रिस्टिन जो हैं दो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग हैं जो अगर कंबाइन कर जाती हैं तो दे हैव अ synergistic इफेक्ट. टू बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स भी अगर आप कंबाइन करते हैं तो यूजली दे हैव फ्रीक्वेंटली दे हैव एन एडिटिव इफेक्ट बट समटाइम्स दे हैव अ synergistic इफेक्ट. ऑलरेडी आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल लाइक अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंड पेनिसिलिन जब कंबाइन करते हैं तो दे हैव अ synergistic इफेक्ट. बैक्टीरियोसाइडल अगर बैक्टीरियोस्टैटिक के साथ कंबाइन करते हैं, ये क्वेश्चन आता है, अगर बैक्टीरियोसाइडल बैक्टीरियोस्टैटिक के साथ कंबाइन कर रहे हैं एंड द ऑर्गेनिज्म इज हाईली सेंसिटिव टू बैक्टीरियोसाइडल, तो उसमें क्या होगा? एंटागोनिज्म होगा. क्यों? क्योंकि बैक्टीरियोसाइडल ड्रग आर एक्टिंग मोर ऑन रैपिडली मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया. अगर बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग ने सप्रेस कर दी ग्रोथ को तो वही जो हाईली सेंसिटिव है बैक्टीरियोसाइडल ड्रग के लिए अब वो लेस सेंसिटिव हो जाएगा. Then to reduce the severity or incidence of adverse effect, because now you are using the lower dose to prevent the emergence of resistance, to broaden the spectrum of antimicrobial action. Like your beta-lactamase inhibitor, you are combining with beta-lactam antibiotics. अमॉक्सिसिलिन और क्लैवेलिनिक एसिड. क्लैवेलिनिक एसिड क्या होता है? बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर होता है. अपना कोई रोल नहीं है उसका, वो इनहिबिट कर रहा है बीटा लैक्टामेज एंजाइम से, जिससे क्या हो रहा है? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इफेक्टिव हो रही हैं. सो दैट इज इट इज ब्रॉडन द स्पेक्ट्रम दैट नाउ इट इज बिकम इफेक्टिव फॉर स्टेफ ऑरियस, नाइजेरिया गोनोरिया, एच इन्फ्लुएंजा. तो इससे इफेक्टिव हो गई. Which type of antimicrobial drug combination is most likely to exhibit antagonism? So B is the answer, bactericidal plus bacteriostatic for a highly sensitive organism. Now what are the disadvantages when you are combining? क्या होता है? You just randomly combine these antimicrobial agents. So when it is randomly combined, it is not rational. It may increase the incidence of adverse effects. Super infection chances will increase. Non-synergistic doses हैं तो again resistance will develop and efficacy will not come. Cost may increase. Okay, so these are all the disadvantages. Prophylactic use पे आते हैं. Another important thing in this is prophylactic use of antimicrobial agents. Now when you use prophylaxis is very important. So some coming with common cold, and that is you are knowing that it is common cause of common cold is common cold का common cause क्या है? वायरस है, but antibiotic prescribe कर दी जाती है. So that is advisable. Why it is prescribed? So that कि bacterial infection ना हो. But it should not be prescribed, otherwise it may leads to resistance. So prophylaxis has to be given judiciously. So when it should be given when the prophylaxis is you are giving for specific organism, like you give prophylaxis of penicillin G in rheumatic fever. ठीक है, जो जिसके लिए when it is specific, that because rheumatic fever में बहुत ज़्यादा chances होते हैं कि they may get infected and then it may leads to heart deterioration. ठीक है, अगर rheumatic fever में आपने नहीं दिया penicillin की prophylaxis, so you need to give that. So whenever it is specific, you need to give the prophylaxis. और in high risk cases क्या है कि सर्जरी आपकी बहुत prolonged चली हो, in that case, और अगर कोई prosthesis लगा है, immunocompromised है patient और extensive tissue handling हुई है, so in these all cases you need leg amputation is there. In all these are the high risk cases, you need to give prophylaxis. Or in surgery by classifying the wound. So that can be classified as clean contaminated, clean contaminated, contaminated, dirty contaminated. So these are the way it is classified. You can see in your books that based on the infection, based on the inflammation, abscess, they are classified into these categories. So if it is just clean wound, you need not have to give prophylaxis. In case of clean contaminated, that is usually the surgery is
clean, but there are chances that it may get contaminated because you have penetrated a viscera. So in that case you need to give prophylaxis. रूल ये है कि प्रोफाइलैक्सिस को 48 आवर्स से ज़्यादा नहीं देनी है, ठीक है. दैट इज़ द रूल कि 7 डेज अगर आप थेराप्यूटिक रोल के लिए एंटीबायोटिक दे रहे हैं, यू गिव फॉर नॉट मोर देन 7 डेज, और अगर आप यहाँ दे रहे हैं प्रोफाइलैक्सिस नॉट मोर देन 48 आवर्स. जनरल रूल इज दिस. यूजली single dose of prophylaxis is given when you're giving orally. You give 1 hour before, ठीक है. parenterally तो just before the procedure you need to give. कौन सी ड्रग दी जाती है प्रोफाइलैक्सिस के लिए? अमॉक्सिसिलिन 2 ग्राम, सिफेलेक्सिन 2 ग्राम, सेफेड्रॉक्सिल 2 ग्राम, और इफ दे आर allergic to this, then you can give clindamycin, azithromycin or clarithromycin 600 to 500 milligram. Parenterally, ampicillin 2 gram, cefazolin 1 gram, vancomycin. If allergy to this, then vancomycin in methicillin resistant Staph aureus, clindamycin, cefuroxime or metronidazole combination, and xantamycin or metronidazole combination, especially in gut and biliary surgery, क्योंकि वहाँ पे aerobic and anaerobic infection, both mixed infection is mostly the cause for infection in gut or biliary surgery. So you need to give a combination antibiotic. Even sometimes if it is not sensitive in vitro, but if it is sensitive in vivo, then you can give that antibiotic. You can continue with the antibiotic. What can be the factors? Prolong use कर दिया, resistance हो गया, और right dose नहीं दिया आपने, right drug नहीं choose करी, या right route of administration नहीं use किया. जो emergency में आप oral drug दे रहे हो that have a slow action, so then it may cause failure of antimicrobial therapy. Or so the drug factors are there. If you have not diagnosed it properly, you have not selected a drug properly, then you can do this failure of antimicrobial therapy. Immunity is low, patient related factors, some disease is there like renal or hepatic function you have not checked. Again, so this all, there are various causes which can lead. So all this we have already covered up. These all will come in here also, that is failure of antimicrobial therapy. So we'll discuss now this question. A lady aged 40 years weighing 60 kg is undergoing selective cholecystectomy for multiple gallstones. She is asymptomatic. Does she require antimicrobial prophylaxis? Who's saying obviously? Yes. Stand up and say boldly if you're saying obviously. Why you're saying obviously? Does she require antimicrobial prophylaxis? Q. This is a clean wound, elective surgery, cholecystectomy is there. But what is? You are touching the viscera, so it will come in clean, contaminated. So that there's chances of contamination are there, so you will prescribe antimicrobial agents. How? What will you choose here? Single dose. Usually you will choose single dose. अगर if the surgery is for more than 2 hours, उसको हम prolonged surgery कहते हैं. If it is more than 2 hours तक जा रही है, so then you can give another dose. ठीक है? So you can use single dose, and usually what is the, so can come here again. So which is the choice here in this list? So you give a combination of the, because it is a gut and biliary surgery. So combination, because anaerobic infections are also, there is a risk of anaerobic infection. So which is the drug you will choose from this list? List देख के बताओ कौन सी choose करोगे? कौन सी choose करेंगे? Yes, stand up, second row. जेंटामाइसिन और मेट्रोनिडाजोल का कॉम्बिनेशन, या सेफिरोक्सिम 1.5 ग्राम विथ मेट्रोनिडाजोल 0.5 ग्राम. ठीक है, तो ये चूज करेंगे हम एंटीबायोटिक.
Now what is probiotics? प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? कॉमनली प्रोबायोटिक्स लेनी चाहिए क्या? जब भी हम एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स देते हैं, यूजली विद ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स वी और द एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स वी प्रिस्क्राइब प्रोबायोटिक्स. They are the products which contain viable or non-pathogenic microorganisms administered orally to alter the intestinal microflora. किस लिए दिए जाते हैं? टू प्रिवेंट, किस चीज के लिए दिए जाएंगे प्रोबायोटिक्स? टू प्रिवेंट, यस, एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड डायरिया, दैट इज सुपर इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए आप प्रोबायोटिक्स दोगे. कौन से हैं प्रोबायोटिक्स में? गुड बैक्टीरिया कौन से होते हैं? लैक्टोबैसिलस, बिफिडोबैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोकोकस, सम इंट्रोकोकाई एंड सैक्रोमाइसिस बुलारिडी. So they are useful in acute infectious diarrhea, antibiotic induced diarrhea. So in the curd also there is lot of probiotics. So you can advise the patient to take curd instead of giving antibiotic. But if you need to give prolonged therapy, okay, or if the immunity is low, so you can give probiotics with it. There is a list of MCQs. You can start doing it and then we can discuss it.